निरोगिता और समृद्धि के आशीष बरसाती रहे। इसी लाइफ के ग्लोबल लॉन्च के अवसर पर हम सभी आमंत्रितों का भी हृदय से स्वागत करते हैं। देवियों और सज्जनों, भावी पीढ़ी जिसे हमारे पर्यावरण की धरोहर को संजोकर रखनी है, ऐसे इन बच्चों को अब मैं मंच पर आमंत्रित करती हूं मंचासीन महानुभावों का स्वागत अभिवादन करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। गुजरात के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल जी से अब मेरा सादर अनुरोध है आपके स्वागत भाषण के लिए। मिशन लाइफ के ग्लोबल लॉन्चिंग अवसर पर हमारे मार्गदर्शन करने उपस्थित विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता और हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी साहब, संयुक्त राष्ट्र के महासचिव श्री एंटोनिया गुतारेस, विदेश मंत्री श्री एस जयशंकर जी, संयुक्त राष्ट्र के विभिन्न एजेंसियों के प्रतिनिधिगण और भारत के मिशन के प्रमुख और सभी केंद्रीय मंत्री श्री एवं प्रतिष्ठित अतिथिगण, आप सभी का मिशन लाइफ के ग्लोबल लॉन्चिंग समारोह में हार्दिक स्वागत करता है। आज हम इस मंच से गौरव के साथ कह सकते हैं कि जब विश्व में ग्लोबल लीडर सोलर एनर्जी तथा ग्रीन क्लीन एनर्जी की सिर्फ बात कर रहे थे, तब गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने अपनी दूरदर्शिता से इस विषय में ठोस कदम उठाए थे। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी के गुजरात के मुख्यमंत्री कार्यकाल के दौरान उनके नेतृत्व में गुजरात एशिया का पहला ऐसा राज्य था जिसने 2009 में एक अलग क्लाइमेट चेंज विभाग की शुरुआत की थी। आदरणीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के विजन से ही राज्य में कैनाल टॉप सोलर प्लांट स्थापित किए गए और सीमावर्ती क्षेत्र चारणका में 730 मेगावाट के सोलर पार्क की स्थापना हुई है। इतना ही नहीं, विश्व जब क्लाइमेट चेंज के सामने लड़ने के रास्ते खोज रहा था, तब नरेंद्र भाई मोदी जी ने अपने अनूठे विजन कन्वीनियंट एक्शन पुस्तक द्वारा पूरे विश्व को इस समस्या का समाधान का मार्ग दिखाया था। पर्यावरण सुरक्षा और क्लाइमेट चेंज के क्षेत्र में प्रधानमंत्री जी के योगदान को यूएन ने भी सराहा है और 2018 में चैंपियन ऑफ द अर्थ का गौरव सम्मान माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को दिया है। पर्यावरण के संरक्षण और संवर्धन के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने नवंबर 2021 में क्लाइमेट चेंज पर ग्लासगो में हुए COP26 के दौरान लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट की अवधारणा को दुनिया के समक्ष रखा था। उन्होंने वैश्विक समुदाय से पर्यावरण मित्र जीवन शैली के लिए लाइफ को अंतर्राष्ट्रीय जन आंदोलन के रूप में आगे बढ़ाने की अपील की थी। अतीत से प्रेरणा लेकर वर्तमान में कार्यरत और भविष्य पर ध्यान केंद्रित कर लाइफ को एक वैश्विक आंदोलन बनाया जा रहा है, जो भारत में पर्यावरण मित्र संस्कृति और परंपरागत प्रथाओं का निर्माण करेगा। रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में पहल करते हुए गुजरात ने देश में सबसे ज्यादा 4 लाख से अधिक घरों को सोलर रूफटॉप इंस्टॉलेशन के साथ कवर कर लिया है। प्रधानमंत्री जी के दूरदर्शी नेतृत्व और मार्गदर्शन में गुजरात ने अपनी सर्वसमावेशी और प्रगतिशील नीतियों के जरिए
बिन परागत ऊर्जा क्षेत्र में 18 गीगावाट की स्थापित क्षमता की उपलब्धि हासिल की है। आज हम सब एकता नगर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के परिसर में उपस्थित हैं। भारत की एकता और अखंडता के शिल्पी सरदार साहब की विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी की प्रेरणा और संकल्प का परिणाम है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस परिसर को इको फ्रेंडली और इको टूरिज्म स्पॉट के रूप में विश्व समक्ष प्रस्तुत करने हमें मार्गदर्शन दिया है। पर्यावरण रक्षा और ग्रीन क्लीन एनवायरनमेंट के हर पहलू की इस एकता नगर में आप बारीकी से अनुभूति कर सकते हैं। दुनिया की सबसे ऊंची सरदार पटेल की प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के सानिध्य में शुरू किया गया यह वैश्विक मिशन निस्संदेह 21वीं सदी का सबसे बड़ा पर्यावरण आंदोलन बनेगा। इस विश्वास के साथ मैं फिर एक बार आप सभी का स्वागत करते हुए अपनी बात पूर्ण करता हूं। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय जय गरवी गुजरात। धन्यवाद मुख्यमंत्री जी। और अब समय है हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की संकल्पना से चरितार्थ और उनके दूरदर्शी नेतृत्व से अनुपालित लाइफ के सिद्धांत को दर्शाती और उसमें जन जन की भागीदारी का आह्वान करती एक लघु फिल्म के निदर्शन का। सब कहते हैं कि दुनिया बदल रही है। कभी कभी मुझे भी लगता है हमारी दुनिया बदल रही है, पर अच्छे के लिए नहीं, बुरे के लिए। पर ये हुआ कैसे? मैं भी चाहती हूँ हमारी दुनिया बदले, लेकिन अच्छे के लिए। और जब 2030 में मैं 21 साल की हो जाऊंगी, जोश और सपनों से भरी, सिर्फ मैं ही नहीं, लाखों लोग और भी, तब क्या हमारी दुनिया हमारे सपने पूरे कर पाएगी? 2030 तक ही तो हम सब ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को पूरा करने का वादा किया है ना? मतलब आज से 2000 दिन बाद क्या हम वो वादा पूरा कर पाएंगे एक साथ? हाँ, बिल्कुल। शायद इसका हल हमारे पास है, बस जरूरत है तो इसे जन आंदोलन बनाने की, स्वच्छ भारत मिशन की तरह। यही तो लाइफ है। लाइफ, पता है ये मैंने सबसे पहले कहाँ सुना? ये एक शब्द है लाइफ, LIFE, यानी लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट। आज जरूरत है कि हम सभी लोग एक साथ आकर कलेक्टिव पार्टिसिपेशन के साथ लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट यानी लाइफ को एक अभियान की तरह आगे बढ़ाएं। ये एनवायरमेंटल कॉन्शियस लाइफस्टाइल का एक मास मूवमेंट बन सकता है। आज आवश्यकता है माइंडलेस और डिस्ट्रक्टिव कंजम्पशन के बजाय माइंडफुल और डेलिबरेट यूटिलाइजेशन की। लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट भारत में बना दुनिया के लिए। हमारे प्रधानमंत्री जी की ये सोच सिर्फ भारत के लिए ही नहीं, पूरे विश्व के लिए है। किसी एक इंसान या समुदाय के लिए ही नहीं, हर राष्ट्र के लिए है। और हम सब इस आंदोलन से जुड़ सकते हैं इन 5 कदमों से। पहला कदम वही जो हमारे दादा दादी, नाना नानी हमेशा करते आए हैं। सदियों से सुनते बोलते आ रहे हैं कि मौसम में लगे और आसपास उगे वही खाओ पियो, सेहत चौकस और साथ में खाने और ईंधन की बचत भी। நமது உணவுகள் இப்பொழுது மாற்றப்பட்டிருக்கிறது. நாம் தினைகளை இந்த நேரத்தில் வரவேற்றுக் கொள்கிறோம். ஆனால் தினைகள் நமது உணவுகளையும் மகிழ்ச்சியையும் கலாச்சாரத்தையும் அறிவு கொண்டு இருக்கிறது. அதனாலே நாங்கள் தினைகளை வரவேற்றுக் கொள்கிறோம். दूसरा कदम, कदम उठाओ, समझे? मेरी रोज की सवारी, बस नंबर 11, मेरे पैर। मैं रोज साइकिल से ऑफिस जाता हूँ क्योंकि मेरी कंपनी हमें वॉकिंग, साइकिलिंग, कारपूलिंग के लिए एनकरेज करती है। अगर हम सब मिलके ये कर सकते हैं
तो पर्यावरण की सुरक्षा में योगदान दे सकते हैं। तीसरा, सही चुने और सही चुन पाए इसके लिए डिमांड भी करें। सोसाइटी में घर खरीद रहे हैं, बड़ा डिसीजन है, पर कुछ चीजें नॉन नेगोशिएबल हैं, जैसे वाटर हार्वेस्टिंग एंड सोलर पैनल। और इन्हें पूरा करना रियल एस्टेट इंडस्ट्री की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पहले कस्टमर हमारे पास आते थे ब्रांड के लिए, प्राइस के लिए, वारंटी के लिए। अब कस्टमर आते हैं हमारे पास 5 स्टार रेटिंग के लिए और एलईडी बल्ब्स के लिए। आजकल ज़्यादातर डिलीवरी कंपनीज ई बाइक यूज़ करने लगी है, अच्छा लगता है। चौथा कदम सिंपल, लाइव स्विच ऑन करने के लिए स्विच ऑफ करो। पांचवा कदम, सबको बताओ और इस आंदोलन को घर घर ले जाओ। मेरे देश को अपना वादा याद है और वो वादा हम बातों से नहीं, काम से पूरा करेंगे और हर देश, हर इंसान को साथ लेके पूरा करेंगे। एक्ट टुगेदर लाइफ के लिए। तो ये है लाइफ का जन आंदोलन। विश्व भर के देश उत्साहित है लाइफ के इस अभियान में भागीदारी के लिए। अर्जेंटीना, एस्टोनिया, फ्रांस, जॉर्जिया, गयाना, मेडागास्कर, मालदीव्स, मॉरिशस, नेपाल और यूनाइटेड किंगडम्स, इन सभी देशों के राष्ट्रीय अध्यक्षों के उत्साहवर्धक और लाइफ के प्रति उनके सहयोग से सबर उनके इन संदेशों को अब आइए सुनते हैं। Buenas tardes a todos y a todas. Estoy aquí en Buenos Aires, pero no quise estar ausente en este encuentro, al que nos ha convocado el primer ministro Modi. El mundo vive un tiempo singular, un tiempo asignado ya no solo por una pandemia, sino por una profunda desigualdad. Una desigualdad que hace que muy pocos concentren el ingreso y el hambre se distribuya entre millones de habitantes del mundo. El mundo además sufre una crisis porque está usando y malgastando recursos no renovables que además generan efectos en el ambiente definitivamente maliciosos. También es cierto que esa concentración y la guerra que se ha desatado ha generado un problema en la seguridad alimentaria del mundo que debe llamar la atención de todos los países de la comunidad internacional. Frente a esa realidad, tenemos que ver cómo enfrentarla. Y me parece que esta iniciativa, la iniciativa LIFE, puede servirnos en mucho a encontrar un camino. Porque uno de los caminos es hacer que los estados y la sociedad civil puedan lograr los consensos necesarios para ir poco a poco saliendo de esta crisis que hoy vivimos. Tenemos que hacer que el mundo se desarrolle, que la pobreza baje, que la igualdad aparezca. Y tenemos que lograr para eso que las producciones sean sustentables, sean innovadoras y fundamentalmente sean respetuosas del medio ambiente. Sabiendo que la primera democracia del mundo, India, se ha abocado a buscar una salida, yo me quedo más tranquilo. Y lo que no quiero es dejar de sumar a mi país en esa iniciativa, en esa búsqueda. Aquí estamos, acompañando la iniciativa LIFE para hacer que los objetivos de sostenibilidad para el desarrollo con miras al 2030 podamos hacerlo posible entre todos y todas, cada uno de los habitantes de esta tierra. Muchas gracias. Dear friends, Namaste. The need for a collective response to address climate change and biodiversity loss is stronger than ever.
We are grateful to Prime Minister Modi for his leadership, together with the UN Secretary General, in launching Mission Life. The power of change lies in working together towards a common goal and engaging all the people and communities on the planet. An excellent example of this is World Cleanup Day. It is an extensive one-day action that started in Estonia and has spread to 191 countries. At COP27, we will call for even more countries to join us. By the way, India has been very active in World Cleanup Day. Last year, an amazing 1.2 million people took part in this initiative in India. That is impressive. Thank you. Russia's war against Ukraine has triggered a global energy crisis. This further underlines the need to move towards renewable energy and sustainability. We can achieve even more if we combine the green transition with the digital one. We have digitized the energy network in Estonia and see the potential this has for energy savings as well as innovation. It is time for a profound change in our lifestyle. We need to place sustainability front and center. I'm glad that the climate action is one of India's G20 presidency priorities, and I wish you a successful presidency. Dear Prime Minister, dear Narendra, dear colleagues, dear friends, Namaste. I wish I could be with you in Kevadia for this very special moment. At a time when our world is subject to increasing geopolitical tensions, we have no choice but to choose cooperation over division for one single reason. No one can address global challenges, and especially climate change, on its own. The LIFE initiative is part of this agenda for stronger cooperation. I wanted to say a few words to wish you a great success in its implementation. At the current pace, if the global population reaches 9.6 billion by 2050, the equivalent of almost 3 planets could be required to provide the natural resources needed to sustain current lifestyles. Governments, businesses, people, we must therefore all cooperate and rethink our models and behaviors. Sustainable consumption is all about doing more and better with less. We are already on that track. The current surge in energy prices is leading many countries in Europe to take the path of sobriety. In France, we will reduce our energy consumption by 10%, acting all over the board in transportation, housing, industries, and other sectors. But this will not be a temporary response before going back to our old ways. What we are talking about is a paradigm shift, because we will not reach net zero by 2050 if we don't act on the demand side and substantially reduce our energy consumption. Beyond the current crisis, as the effects of climate change are already unfolding, every citizen should now be aware that it is no longer possible to use natural resources such as water as if they were inexhaustible. We need to meet this challenge together by promoting ambitious public policies in all sectors, by launching coalitions of the willing. I am pleased in that regard that France and India agreed on leading a global initiative on the end of single-use plastics, and by fostering a common partnership between citizens committed to change their lifestyles and therefore the world. The LIFE initiative, Prime Minister Modi, will give us this opportunity. France looks forward to working with India to make this initiative a success, including in the perspective of the Indian presidency of the G20 next year. Thank you for this initiative, and thank you for your attention and your commitment. Excellency Shri Narendra Modi, Honorable Prime Minister of India, dear ladies and gentlemen, dear friends, I am honored and pleased to address this distinguished audience at today's remarkable event and to congratulate India for taking the lead to launch this extraordinary mission in the beautiful city of Kevadia of India.
Georgia welcomes and fully supports this global initiative timely introduced by His Excellency Narendra Modi, which promotes an environmentally conscious lifestyle that focuses on the principle of mindful and deliberate utilization. In this regard, we have already taken significant steps to fulfill our international commitments, as well as obligations under the EU-Georgia Association Agreement. To strengthen the environment-related governance systems in the country, Georgia has improved its environmental assessment systems and introduced more effective public participation mechanisms at the earliest possible stage of the environmental decision-making process. Major reforms have been carried out recently in the ambient air protection field to improve air quality throughout the country. Georgia is one of the few countries worldwide where national parks are a genuine high-level national priority, embedded in national policies and strategies. National parks of Georgia have experienced a significant increase, and nowadays it covers almost 12% of our territory. 40% of my country's territory is covered by forests. Therefore, sustainable forest management is an important priority for our government. We spare no effort to implement sustainable forest management that will support the ecological stability of forest ecosystems, enhance the socio-economic benefits for the public, and reduce the pressure on forests. In order to address the negative consequences of climate change, Georgia, in accordance with the Paris Agreement, has updated nationally determined contribution document, which sets a new 2030 climate change strategy and an action plan for mitigation measures. I'm proud to state that our country stays committed to continue intensive reforms for the better protection of the environment, biodiversity, and meeting its national and international climate goals. I strongly believe that all together we can achieve our common goal and save our planet. Thank you. Our planet is under threat. More than 75% of Earth's land is substantially degraded, undermining the well-being of billions of people. Collective action is needed to protect our planet. Here in Guyana, we have started. Our forest is the size of England, storing 19.5 gigatons of carbon, one of the lowest deforestation rates in the world. So we are leading by example, and we are building a Guyana on a low-carbon development strategy 2030 that not only look at the environmental value of what we have, but also look at how we can improve livelihood options, create new livelihood options for forested communities, and help people to become prosperous whilst at the same time safeguarding our environment. I therefore wish to extend best wishes to Prime Minister of India, Prime Minister Narendra Modi, on the launching of the Mission Life logo and mission document, which seeks to mobilize 1 billion Indians to become pro-planet people by 2027, who will practice simple environment and climate-friendly behavior in their daily lives. Congratulations, India, for taking the lead in pioneering this movement. Guyana is committed to protecting and promoting green economic activity through actions that support the Sustainable Development Goals. Simple actions taken every day by citizens across the globe will help to harness the full potential of this collective action. We must do everything within our power to protect and preserve the environment by making the necessary lifestyle changes. All of us, we have an individual and collective responsibility as a family of humanity to do our part in protecting and safeguarding our environment so that future generations can enjoy